Oh, look at the little fella. He's so cute. Oh my God! Just look at the face. Look at the smile. Hello everyone, welcome to another vlog of the Robins of Kolkata. This is the Tollygunge chapter and I'm covering from Chetla Boys. Yeah, the location of this place is basically Chetla. You can clearly see the bridge, the Chetla bridge, and we are below the bridge and we are entering the location where we have Can't forget it. Now I know what I've got to do is find my way back to you. My mask, it got removed a little bit. Okay, so here we are serving. Okay, I need to keep the camera a little stable, I guess. This is where you see the Robins. This is Mr. Shupio. This is Mr. Sabanto. I guess you're familiar with some of the faces and some faces are new. Look at the little fella, he's so cute. Oh my God, just look at the face. Look at the smile. What's your name, buddy? Shubhranshu. Okay, so he introduced himself. I already knew his name. I was just Please support us. yeah. Please support and subscribe to my channel. Hit the bell icon. Hello everyone. Welcome to your beloved channel, The Rider. Well, this is my 5th day with the Robin Hood Army. And today we are going to do something different. We are going to interview the members of the Robin Hood Army, the Robins. Personally, we are going to interview the members and see what they have to say on different matters related to the Robin Hood Army, take their opinions on different matters related to the Robin Hood Army. Let's see who is willing to give the interview. Look at this little princess. She's so cute. Oh my God. Why so serious? अच्छा मैम, आपको क्या लगता है कि आपने अब तक क्या क्या एक्सपीरियंस किया है रॉबिन हुड आर्मी में? जो एक्सपीरियंस है वो इट्स वेरी नाइस एंड ये बहुत ही सेल्फलेस सर्विस है. किसी का कोई लेना देना नहीं है इससे, बट इट्स टोटली अ सेल्फलेस सर्विस. तो ना एक्चुअली ये ट्रांसपेरेंसी है ना, जो खाना मिल रहा है वही डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है. एकदम पैसे का कोई बात नहीं, पैसे का कोई बात नहीं, डोनेशन का कुछ नहीं, डोनेशन कोई नहीं. हाँ, तो ये सबसे अच्छा है. मतलब हम लोग ग्राउंड लेवल में आके देख रहे हैं कि हमारा खाना डिस्ट्रीब्यूट, वी आर कलेक्टिंग द फूड एंड वी आर डिस्ट्रीब्यूटिंग. कोई भी सेल्फलेस सर्विस तो आपको बहुत खुशी देती है. अगर आप कहाँ भी मनी ट्रांसफर कर देते हैं ना, तो ऐसा खुशी नहीं मिलता. ऐसा खुशी नहीं मिलता. खाना डायरेक्टली वो लोग को मिल रहा है, तो ये देख के बहुत खुशी. और एक रिलीफ ये भी मिलता है कि इतने सारे लोग जो हैं उनका पेट भर रहा हो. दे डोंट हैव टू वरी अबाउट देयर मील्स, है ना. कोई भी भूखा नहीं सोएगा. लॉकडाउन के टाइम में भी हर रोज इन लोगों को खाना मिल रहा है. मतलब ये बहुत वी फील वेरी हैप्पी एंड वेरी कंटेंट कि हम लोग भी खा रहे हैं, इन लोगों को भी खिला रहे हैं. एग्जैक्टली, हाँ, बहुत अच्छा है. थैंक यू मैम. So what is the difference between Robin Hood Army and other NGOs? The basic difference is basically we the Robin Hood Army members. Basically we call ourselves the Robins. We distribute our food, we distribute whatever we get from you, and we take this thing along with us ourselves and distribute in the ground. We are getting the contributions of the food or the stuffs from you, and we are distributing in our own hands to these neighbors of ours who don't have enough to eat or enough to wear or enough luxury, right? And that is the main thing, right? We are not asking for money, we are not asking for any other items. We just need food, and you give us food, you contribute, and we distribute. That is the main
difference between other NGOs and Robin Hood Army. That we do it ourselves in the ground. Okay. So Samuntara, what do you think is the future of the Robin Hood Army? See, the thing is like that for in last 6 years, Robin Hood Army has grown from 5 volunteers. Right now, today we have 1,50,000 plus volunteers in 20 countries and over in 225 cities. And we have fed 7.5 crore of hungry people in India and all over the world. And if you ask about the growth of Robin Hood Army, last 5 years we have fed 3 crore people, and from last year pandemic when the corona started, in last 1 year we have fed around 4 crore of Indians in India itself. So that is the example of what Robin Hood Army can do and how Robin Hood Army can grow. Robin Hood Army is growing in around 500% every year, right? Say it about volunteers, joining of volunteers, and also feeding the people. So in other words, Robin Hood Army is growing while we are speaking. Right. Robin Hood Army basically grows in every moment, every second, every minute in all the cities in India. You heard that? That is the strength of Robin Hood Army. आप बताइए, what has been your experience in the Robin Hood Army? আর্মি का এক্সপিরিয়েন্স বহুত মানে খুবই ভালো, কারণ আমাদের সবথেকে বড় কথা জিরো ফান্ডিং অর্গানাইজেশন, কোনো রকম কোনো টাকা নেওয়া হচ্ছে না, কিন্তু তা সত্ত্বেও ওয়ার্ল্ডের 10টা কান্ট্রিতে আমাদের ভলেন্টিয়াররা ছড়ানো হয়। এখানে আমার সবথেকে ভালো লাগে এখানে এসে যে সবার সাথে মিলে যে কাজ করা, বা এখানে একাডেমিটা যেটা এখন একটু বন্ধ আছে, আমরা একাডেমিও করি, প্লাস যে আমাদের যে ফুড কন্ট্রিবিউশনটা যেটা, সেটাতে খুব ভালো লাগে। ওদের ওকে দেওয়াতে ওদের যে স্মাইলটা আমরা পাই সেটা আমাদের কাছে সবথেকে That is priceless. দ্যাট ইজ প্রাইসলেস। আপনার মতে রবিন হুড আর্মির ফিউচার কি? আপনার কি মনে হয় যে ফিউচারে কি হবে? আমরা আরও ভালো করে কাজ করব, আমরা আরও সবাইকে চেষ্টা করবো কি সবাই আরও ভলেন্টিয়ার আমাদের সাথে যোগ করুক। আরও যেখানে এখনো ওদের 1% কমপ্লিট হয়েছে, আরও অনেক দূর চলা বাকি, কি আরও অনেকটা পথ চলা বাকি। Okay. আমরা চাই সবাই আমাদের সাথে জয়েন করুক, আরও ভালো করে কাজ করতে পারে। So we are looking at a dream in which in the future there is no hungry person left and there is no need for organizations like Robin Hood Army, right? Thank you. Thank you for your interview. Thank you for your time. Hello everyone, today is 30th of May, my 6th day at the Robin Hood Army, and this is our third site. We have already served food to a lot of people. The second site was below the Garyahat flyover. Hello everyone, welcome to the 7th day of my drive with the Robin Hood Army, and यहाँ पे आप देख सकते हैं हम लोग हाजरा के यहाँ पर आए हैं लोगों को खाना खिलाने, फूड सर्व करने आए हैं हम लोग, और यहाँ पे आप भीड़ देख के आप समझ सकते हैं।